सेक्शन में जब आते हो, उसमें तीन मेजर ग्रुप्स है. एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर बैंक्स है, फिर अदर इंस्टीट्यूशंस है. नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नॉन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, जैसे नबार्ड, सिडबी. ओके, फिर यू हैव एचएफसीज एंड अदर एनबीएफसीज. एनबीएफसी इज बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. फिर बैंक्स के अंदर यू हैव scheduled commercial banks like the private and public banks. So you have this cooperative banks at the urban level, at the district level and state level. And then other institutions include agricultural and rural development networks and apex cooperative housing societies. So primary land development banks, etc., are the channel for that. So these सारे channels है, and all of them indirectly or directly contribute to the beneficiaries. Okay, so जब हम हाउसिंग फाइनेंस को असेस करते हैं, okay, जो होम लोन का साइज है एंड ईज ऑफ असेसिंग रिस्क है, उसके बेसिस पे they decide who will be catering to that particular section or who can provide finance to that particular section. Okay, तो इसमें क्या हो जाता है, you have major two parameters. एक है जो size of loan चाहिए, और दूसरा है ease of assessing risk है. Right now you can see four, मतलब overlap तो होगा ही. There's no clear definition of who's a middle income, who's a lower income, etc. Okay, below poverty line लिखा है, but then it is not necessary that everybody can afford to keep aside a portion of their money for building a house or buying a house, right? जो housing finance है, okay, so let's read this particular graphic. है जो basically जो largely underserved population जो बोल रहे हैं is falling from this area, मतलब is coming into this area where you need around say 8.58 lakhs, okay, and you don't have the ease of assessing risk. So when I'm saying ease of assessing risk, तो banks और जो funding agencies होते हैं, उनके लिए risk क्या होता है? You're paying them, मतलब they're giving you money. They basically need to know you have the capacity to repay the loan. If they realize or feel that they cannot depend on you, मतलब अगर वो यकीन नहीं कर सकते कि आप रिटर्न कर सकते हो जो पैसे वो दे रहे हैं with interest, फिर they will deny loans or they will not be providing loans in such cases. Okay, तो उनके लिए जो असेसिंग रिस्क है, ओके, वो जितना इजी होता है उतना ऑटोमेटिकली दे देते हैं. सो ईज ऑफ असेसिंग रिस्क इज हाईएस्ट इन फॉर्मल प्ले, क्योंकि उनके पास आईटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके पास रेसिडेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट होता है. तो हम अगर बैंक में जाके हाउसिंग लोन पूछते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या क्या पूछते हैं, मांगते हैं हमसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट, फिर ऑटोमेटिकली उनके लिए प्रोसेसिंग में मुश्किल हो जाता है. सो जो रिस्क है फॉर्मल फॉर्मल एम्प्लॉयड पीपल के लिए वो कम है. ओके, सो दे विल प्रेफर गिविंग लोन्स टू दिस सेक्शन ऑफ पीपल. अभी जो अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन है वो अंडरसर्व्ड है क्योंकि वो ज्यादातर कैश में कमाते हैं, इनकम डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ फॉर्मल नहीं रहता है. ओके, फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, रेसिडेंस डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होता है. A lot of times, say if you're living in a squatter settlement or a slum, sometimes you'll not even have proof of your residence or proof of identity. Okay, so ऐसे चीज में what can the bank do? Where will they get or where will they be able to provide you this confirmation from? That is where the issue comes in. Okay, फिर select HFCs जो है, मतलब हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस जो भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, okay, if at all they're able to assess your income alternatively. Okay, say for example आपके जो चेक, मतलब let's say आप कैश से ही यूज करते हो, you don't have IT documents or anything, you don't have like a proper income documents or anything, but you have like savings का history, you have some guarantor that's already there. ऐसे ऐसे लोग के लिए कुछ कुछ corporations, कुछ कुछ financial institutions दे देते हैं. Okay, so Divan Housing is an example. Average size was 6.5 lakhs for them. Okay, so sometimes low and focused HFCs. Okay, so उनके लिए क्या होता है, स्मॉल टिकट साइज लोन्स चाहिए, जैसे कि गुजरात रूरल हाउसिंग जो हमने देखा था, GRUH. Okay, so these people had a smaller limit. Okay, so they could give you loans of say 4 to 5 lakhs small ticket sizes के लिए जो है वो पर्टिकुलर एरिया में अगर चाहिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर जो GRUH है वो बस गुजरात में ऑपरेट कर रहा था. ओके, so they can provide housing for people within Gujarat because they have some control over the geography. So they have some limited coverage or capacity जो है
वो है, सो दे समटाइम्स प्रोवाइड फॉर ऑल दीज पीपल। फिर जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स है, ओके, तो उनके लिए क्या चाहिए? उनको दे जस्ट नीड टू नो दैट दे विल गेट देयर मनी बैक, ओके। तो हायर जो लोन्स चाहिए और जितना कम रिस्क है, फिर प्राइवेट बैंक्स अंदर आते हैं, दे विल गिव यू मोर मनी, दे विल बी एबल टू say, so average loan size was 15 lakhs, HDFC, ICICI. So HDFC is Housing Development Finance Corporation that was also created for this purpose. Okay, so they were giving a lot of money for this. So the housing finance sector has expanded even more from it. Okay. I'll try and see if you have anything more. मतलब अगर कुछ update है ये वाला particular section में, मैं देख के बताती हूँ. Okay, but more or less ये सारे housing financial institutions है.